A very good morning, class 10th students. Today is 20th of July 2020. We were continuing with the chapter Globalization and the Indian Economy. In the previous videos, I told you what is globalization and what are the factors behind globalization. I told you two important factors, that is development of technology and liberalization of trade and investment. The third factor that is behind the development of globalization, जो तीसरी फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ा है या अच्छे से बढ़ा है या बढ़ता ही जा रहा है, इज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज. आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में कम से कम हज़ारों एमएनसीज हैं जो 91 के बाद आई हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, नाइक, एप्पल, सैमसंग, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर के देशों से ऑपरेट होती हैं, जिनके सेंटर्स अब इंडिया में खुले हैं. इसी तरह इंडिया की बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने सेंटर्स दूसरे देशों में खोले हैं. These MNCs, multinational companies, when they have moved to different parts of the world, they have expanded their business. They have opened their business in different parts of the world. और एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड को ग्लोबल कर दिया है, अपने बिजनेस को ग्लोबल कर दिया है. सो दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. They have set up their business in different parts of the world and thus contributed to the process of globalization. Further, we are moving in the favor of globalization. Why people say that globalization is fruitful? Fruitful means it is beneficial, it is quite helpful. Why people believe that globalization is very very helpful और favors में कैसे है? Let's see. The international organizations like United Nations, the IMF, World Bank, the Organization of Economic Cooperation and Development, and World Trade Organization have support the idea of globalization. तुमको पता है कि जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो चाहेंगे कि उनका सेटअप दुनिया के हर एक कंट्री में रहे. जैसे यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे जो भी हो, इनके सेटअप इनके ऑफिसेज हर कंट्री में होते हैं. Because they want to develop that country, they want to utilize the resources of that country, they want to help that country, they want that the whole world should be developed, the whole globe should be developed. So all these things, all these units, all these organizations support globalization. So they have already said that without globalization it is not possible to develop the whole world. Okay. Supporters of globalization say there is evidence to show that among the poorest countries, those who trade with the nation, most of them achieve the highest rate of growth and income per head and the greatest decline in poverty. बहुत सीधी सी बात है. Suppose a poor country like Pakistan is supplying the goods to a rich country like China or America. Obviously, the payment will be done fast. The resources of the Pakistan will be developed and Pakistan will get money. In the same way, if the spices, masale of India are supplied to all the countries of the world, the payment of all the countries of the world will come to India. The countries will set up their units in India, so the Indian country will become, Indian economy will become rich. अब जितनी भी बाहर से कंपनीज आई हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं, they are paying high taxes to the government. They are employing the Indian people. So दो फायदे हो रहे हैं. The employment rate of India is going high and so the money is also coming, though India is becoming rich. So without globalization, without liberalization, money and economy cannot grow. This is what the supporters of globalization say. Supporters of globalization say that to achieve high rate of growth and to have a lot of money, globalization is very very important. This is what the second point says. I will be giving you the easy notes of all these points, so need not have to worry. You just have to understand what I am teaching in easy languages. I am giving you the examples to teach
So first was that all the world organizations, popular organizations, they are in the favor of globalization. And second, globalization helps any poor country achieve high rate of growth as well as a lot of money. A few countries have lowered tariff barriers, it is argued, when gained employment and national income because labor and capital shifted from import countries to expanding new competition in the export industry. अगर हम अपने यहाँ पे लेबर के रूल्स इजी करते हैं, टैरिफ बैरियर्स, हम अपने टैक्सेस कम करते हैं, लॉट ऑफ कंपनीज विल कम हियर, दे विल सेट अप देयर यूनिट्स एंड दे विल एम्प्लॉय द लोकल पीपल. फिर मैं कह रहा हूँ, सपोज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पंतनगर सिडकुल में ज़मीन नहीं दी होती, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम नहीं किए होते, तो कंपनीज लाइक बजाज, कंपनीज लाइक SCL, देयर आर मेनी foreign companies also that are operating here, they would have not come. And if they would have not come, the income of government would have not increased. So if we are removing the tariff barriers means ki we are lowering the taxes, lowering the taxes. By lowering the taxes, we have achieved national income and because we were having labor. हमें पता है हमारे हिंदुस्तान में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. सो इन काम करने वाले लोगों को काम कैसे मिला? जब फैक्ट्री आई. फैक्ट्री नहीं होगी तो काम नहीं होगा. सपोज गदरपुर में आई ओपन अ फैक्ट्री, फ्रॉम वेयर आई विल एम्प्लॉय पीपल? आई विल एम्प्लॉय द वर्कर्स फ्रॉम गदरपुर ओनली. सो द पीपल ऑफ गदरपुर विल गेट द opportunity to work, and if the people of Gadarful will get the opportunity, their family will become rich, they will get more means of support. So that is what the favors of globalization is there. With the globalization, many companies have come in India, they have opened their units in India, they have given the employment to the local people, they have given economy to the government by paying taxes, and they have also contributed in the national development. दो ही तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, जब लोगों को रोजगार खूब मिले और सरकार पे पैसा हो. दोनों चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से हो रही हैं. ठीक है, उसके बदले सरकार को क्या करना है? सरकार हैज़ टू लोअर द टैक्सेस. ईजी रूल्स बनाने हैं कि कंपनियों को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, ज़्यादा भाग दौड़ ना हो. हम किस काम से दूर भागते हैं? जहाँ पे पेपर वर्क ज़्यादा हो और काम ज़्यादा. हम सोचते हैं बड़ा बवाल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बवाल और ये काम ईजी नहीं है. बट इफ़ द थिंग्स आर ईजी, इफ़ द प्रोसेस इज ईजी, that will be helpful, and the process has become easy because of globalization. So I think 3-4 points which I have explained today you have understood. We'll be continuing with more points in the next video. Thank you.